commitments. And now would like to invite Shri Sanjeev Puriji, the Chairman and Managing Director, ITC Limited. I would then like to request the Director of Reliance New Energy, Shri Nikhilar Meswaniji, to please address the August gathering. Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan Ji, Presidents of Guyana and Suriname, Honorable Ministers of the Union and State, all the bureaucrats and officers of the states, industry captains on the dais and in the audience, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm immensely happy to be attending the 7th edition of the state's Global Investor Summit in West Madhya Pradesh today. It's an honor and a privilege to be speaking at this forum on behalf of our chairman, Shri Mukesh Ambani. Under his visionary leadership, Reliance has grown phenomenally, both as an enterprise, as an enabler of social growth, societal growth and transformation. In his unflinching optimism for India and its future that powers our ventures and inspires our people, in his unwavering faith in the power of our youth that has guided our forays into businesses of the future. Madhya Pradesh is in the heart of India, and as you know, the importance of heart's health in a human body. Under the Honorable Chief Minister, Shivraj Singh Chauhan Ji's leadership, India's heart has made great strides in bringing prosperity and growth. Over the last 10 years, Madhya Pradesh GDP has tripled, with nearly 20% growth in 2022 financial year, which was the best amongst all states in India. MP's significance as a growth driver for the Indian economy has steadily grown over the last decade. And now, at nearly $150 billion, Madhya Pradesh is contributing nearly 5% to India's GDP. Nobody will believe today that this was once counted as India's Bimaru state. Madhya Pradesh has created an effective roadmap for implementation of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji's vision of Atmanirbhar Bharat. The state has enhanced its industrial corridor and logistical capabilities and established itself as an attractive destination for investments. Most importantly, Madhya Pradesh has achieved these feats while carrying the motto of cleanliness and caring for the environment. The carbon neutral and zero waste status of this event is indeed a live testament to the state's commitment. Ladies and gentlemen, I am happy to note that Reliance has been a long-term partner in Madhya Pradesh's growth story. From energy and telecom to retail, India and Reliance in particular has made several investments in the state, creating thousands of jobs and becoming one of the largest contributors to the state's exchequer. The coal-bed methane project in our Shahdol and Annapur districts is one of Reliance's major projects in Madhya Pradesh. This project has contributed well to the social and economic transformation of the region, its people, and is today meeting country's need for environmentally friendly energy. Similarly, Madhya Pradesh is already home to over 730 Reliance retail outlets, 116 of our fuel outlets, providing job to over 15,000 individuals directly and indirectly. Reliance Retail has also set up 20 fulfillment centers or warehouses in Madhya Pradesh with over 60,000 square meters of space. Reliance is also deeply associated with Madhya Pradesh with our grassroots social upliftment efforts. Reliance Foundation today has various livelihood enhancement
and rural transformation projects running across 47 districts of the state with over 34 lakh or 3.4 million beneficiaries. They include a multitude of interventions from women empowerment, disaster management, to solving drinking water problems, enhancing nutrition level of communities, water harvesting and irrigation farmlands, enhancing green cover to safeguarding lives and livelihood through timely advisories. Honorable Chief Minister has charted a non-linear, dynamic path for Madhya Pradesh to reach $550 billion of GDP by 2026. This will mean more than tripling the GDP of the state in less than 5 years. Reliance remains deeply committed to contribute and support to this initiative of the state. Just 3 weeks back, Honorable Chief Minister Ji flagged off Jio's true 5G services in Sri Mahakal Lok corridor. And already this has been rolled out, and the true 5G service has gone live in multiple cities like Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior. Let me promise from this platform today that Jio stands committed to empower all the 428 tehsils across 52 districts of Madhya Pradesh with true 5G by December 2023. We also wish to strengthen our optic fiber network with the support of the Madhya Pradesh government to service even most remote villages. We have already rolled out over 5,000 kilometers of fiber laying and plan to double it to 10,000 kilometers. With this ubiquitous, low latency, 1 Gbps wireless data connectivity, backed by robust, all-round wired connectivity, the revolutionary power of digital technologies will become accessible to every student, every farmer, every worker, and every entrepreneur across the length and breadth of the state. This will positively transform education, farming, and healthcare sectors in particular, and ensure that the world's best services reach every village and town seamlessly. This will also give a boost to the entrepreneurial ambitions of the youth and create value for the society and investors. We are also planning to open 270 new retail outlets in Madhya Pradesh in the next year and double our fuel retailing and advanced mobility solutions footprint. They will support thousands of direct and indirect jobs. As you know, our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has vowed to make India net carbon zero by 2070. Reliance has made a solemn commitment to lead this zero carbon journey for India. Reliance has set a massive target of enabling 100 plus gigawatts of solar energy generation capacity in India by 2030. With the next generation technology, world-class manufacturing setup, and deep integration, Reliance aims to push the solar power cost to one of the lowest in the world, which will boost India's capability to produce world's most affordable green hydrogen. For this purpose, Reliance will explore multi-gigawatt, round-the-clock renewable energy projects in Madhya Pradesh. It is working on biomass for renewable energy generation and has already invested in Madhya Pradesh for producing densified biomass at 6 sites already. We plan to invest in creating more such facilities. All put together, Reliance has already invested over 22,500 crores in Madhya Pradesh, creating large number of livelihood opportunities in the state and contributing to the state's growth phenomenally. Plans are afoot Plans are afoot to invest an additional 40,000 crores in the state in the coming years, which will enable the state to meet the demand for energy sustainably.
unlock its tremendous economic potential, and generate thousands of growth prospects for the people of the state. Ladies and gentlemen, before I conclude, I would like to thank the Honorable Chief Minister, Shivraj Singh Chauhan ji. I wish him all the very best. To him, to his ministerial colleagues, and to the highly dedicated and hardworking officers. I am confident that Madhya Pradesh will scale newer heights of growth and prosperity under your dynamic leadership, sir. And with that, Reliance will not lag behind and partner the state to soar even higher. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद रिलायंस के मध्य प्रदेश में आपके संकल्पों को हमारे साथ साझा करने का। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री संजीव बजाज जी को, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बजाज फिनसर्व लिमिटेड। माननीय मुख्यमंत्री जी, Your Excellencies, the President of Guyana and Suriname, other guests, ladies and gentlemen. I compliment the Honorable Chief Minister for his leadership in organizing the Invest Madhya Pradesh Global Investor Summit 2023. His innovative ideas, his progressive policies, and as he was telling us yesterday, the early focus, I think 2006, when he brought about the first such summit, have led the way for the progress of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has tremendous opportunity for all investors, and let me mention just a few. First, it has a very strong mineral base, and 14% of India's cement production is based here. Many of my colleagues have already mentioned about their investments in that space. It is also a leading producer of coal, manganese, limestone, copper, etc. Second, MP has been categorized as an achiever amongst Indian states in the ease of doing business by the World Bank and DIPB in their rankings. With over 100 industrial areas, 7 smart cities, and a robust multimodal transport system, it offers tremendous promise. Third, the state is a leading producer of a variety of horticulture crops and offers lucrative opportunities for food processing. Next, in the influence area of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, the state is developing multiple industrial zones along this corridor and getting ready to rise to the next level of reform. Fifth, it is also one of the top tourist attractions of the country and has become a hub of cheetah tourism that we've all heard about. So with these points, I believe, and as CII, we encourage and urge investors to leverage on this opportunity. And personally, as far as the Bajaj Group is concerned, the Bajaj Group has been here for decades with many of our businesses, from motorcycles to three-wheelers, lights, electrical appliances, and more recently our financial services businesses, whether in loans or insurance. As much as 2 years ago, Bajaj Finance, our NBFC that gives loans, was present in 150 cities and towns in MP. But looking at the tremendous growth that this state has to offer, within 2 years, we are now from 150 cities and towns in over 300 cities and towns only in Madhya Pradesh. The future of Bajaj is very closely linked with the future of Madhya Pradesh. Thank you. Thank you, sir. Now inviting our next eminent dignitary, Shri Vineet Mittal ji, Chairman, Avada Group. नमस्कार। देश के यशस्वी एवं मध्य प्रदेश के कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, His Excellencies,
ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आए देश विदेश के सम्मानीय अतिथिगण और उद्योग जगत के मेरे मित्रों, आज से 15-20 वर्षों पूर्व मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था और बड़े उद्योग जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए अपने बोर्ड पे जाते थे तो बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे और लास्ट 15-20 वर्षों में जो मध्य प्रदेश में हुआ है उससे काफ़ी इन्वेस्टमेंट ही नहीं आया, बल्कि मध्य प्रदेश का खुद का ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त हुआ है। कल जब मैं एयरपोर्ट से उतर कर आ रहा था तो मेरे साथ मेरे कोलीग प्रशांत चौबे जी थे जो मध्य प्रदेश में सागर जिले में पढ़े हैं और वो बोल रहे थे वो 12वीं कक्षा में जब पढ़ते थे और भोपाल उनको आना होता था तो पूरा दिन लग जाता था। तो मैंने पूछा अब कितना लगता है, तो बोले अब तो 2-3 घंटे में पहुंच जाते हैं सागर से। तो ये मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट है लास्ट 20 इयर्स में। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लास्ट 2 दशकों में बड़े पैमाने में परिवर्तन किया है। यहाँ व्यापक परिवर्तन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुआ है, टूरिज्म में दिख रहा है, आईटी के क्षेत्र में दिख रहा है। और हमारे ग्रुप ने भी जब करीब 15 वर्ष पहले यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव रखा तब वो विश्व का 2nd लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था और इंडिया में भी कहीं उतने बड़े प्रोजेक्ट्स लोग लगाते नहीं थे और पूरा मध्य प्रदेश में सहयोग मिला और 2013 में हम लोगों ने 151 मेगावाट जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और विश्व का 2nd लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था, रिकॉर्ड 1 वर्षों में लगाया था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था नीमच जिले में। अब हमारा ग्रुप आगर में प्रोजेक्ट लगा रहा है करीब 1200 करोड़ का और करीब 1000 मेगावाट के और सोलर के प्रोजेक्ट हम डिफरेंट एरिया में मध्य प्रदेश के लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है इंटीग्रेटेड solar manufacturing में. So right from silicon to module manufacturing, we are sitting near Indore, and this will be one of the largest investment of Avada Group. In first phase, we are setting up 5 gigawatt of cell to module factory, and then going all the way to silicon and sand. And the reason we chose Madhya Pradesh is readily availability of land, water, access, and the biggest advantage is the talent pool. When we looked at few other states and we had to relocate people were easily comfortable relocating to Indore compared to some other smaller towns, and that clicked in its favor to select Madhya Pradesh as the destination for our very large project. And this will be one of its kind, and probably in few years when it will be operational, it will be the fully integrated facility. We are also encouraging our suppliers ecosystem to come and co-invest because we'll need a lot of supply for glasses, frames, and many other components to set up their whole ecosystem along with us here. So not only we are successful, but it also helps Madhya Pradesh to attract more investment. So as an Avada, what convinces us more and more about Madhya Pradesh is that when you set up a large project, you will have a lot of challenge. And what makes Madhya Pradesh unique is that CM Saab himself treats him like a CEO, and every month he will meet and ensure that your challenges are resolved and solved in a time-bound fashion. And one thing, last month when I visited his office and noticed that there was this doha from Sundarkand, which is written on his wall, Ram Kaju Kinhe bin Mohi Kaha Vishram. So सुंदरकांड की इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि भगवान हनुमान बोलते हैं कि राम भक्त
जब तक अपने आराध्य का काज नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम करना भी उनको स्वीकार नहीं है। तो मेरे को इस सेम अप्रोच सीएम साहब में लगती है कि जब तक वो मध्य प्रदेश को 550 बिलियन की इकोनॉमी नहीं बना लेंगे तब तक वो भी विश्राम नहीं करेंगे और पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहेंगे। और उनकी इस लगन और सपोर्ट के से कॉन्फिडेंट होके हम लोगों ने अपने बोर्ड को कन्विंस किया इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स हियर। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आपकी जो मन की बात है वो हमारे साथ साझा करने का, और आपका जो अब मध्य प्रदेश को संभावनाओं का प्रदेश दिखते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रणव अदानी जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर अदानी एग्रो ऑयल गैस लिमिटेड। Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable President of Guyana, Honorable President of Suriname, Union Ministers, distinguished leaders, administrators, captains of the industry, and my dear friends. It is both an honor and privilege for me for addressing such an eminent crowd. Thank you very much for this opportunity to speak here in Indore at the 2023 Madhya Pradesh Global Investor Summit. I'm always happy to visit Indore, not only because it is the cleanest city or because this is the only city where you have the IIT and IIM, पर वो इसलिए भी क्योंकि जब मैं इंदौर आता हूँ तो हमेशा मुझे चांस मिलता है शराफा बाजार का पुआ और जलेबी खाने का। You know, Indore is also an eternal tribute to the belief, penance, and sacrifice, values epitomized by the magnificent Khajrana Ganesh temple and the noble courage of Devi Ahilyabai Holkar. The past 20 years have witnessed a striking turnaround in India's approach to business. I believe the turnaround started in the year 2003 when our Prime Minister Modi ji, then Gujarat's Chief Minister, organized the first Vibrant Gujarat Summit, an event around in India. Modi ji's vision has sparked healthy competition among all the states, not only to bring in investments, but also to compete for the ease of doing business. To me, it is hardly surprising that this state is an entrepreneur's delight. After all, Madhya Pradesh is blessed with everything that an entrepreneur could ask for. It has easy accessibility, an abundance of natural resource, a very young, large, literate workforce, and above all, an approachable and efficient administration empowered by the visionary leadership of Shri Shivraj Singh Chauhan ji. It is this rare confluence that so many positives have encouraged many business houses over here to come and invest in Madhya Pradesh, and the Adani Group is privileged to be one of them. Honorable Chief Minister, let me now present an overview of what the Adani Group is doing in Madhya Pradesh and what more we intend to do going forward. Our ongoing projects in Madhya Pradesh have a combined project value of rupees 27,500 crores. We are operational in a large number of sectors, including power generation and transmission, gas distribution, cement manufacturing, integrated natural resource management, roads, agri-processing, defense, logistics, irrigation, and renewable energy. I'm delighted to announce that not only will we continue our investments in all these sectors, but we will also significantly expand our presence in Madhya Pradesh. Our commitment to
to the state will see us investing in excess of rupees 60,000 crores in a wide variety of projects and sectors, which I anticipate will not only create thousands of direct and indirect jobs, but will also help reshape the economic outlook of several major districts. Close to Indore, our road teams is four-laning the Nanasa-Pitgaon section of National Highway 47. We have taken up the Shakarpench Link Combined Project, a massive piped pressurized water micro-irrigation system. As one of the largest buyers of agriculture commodities in Madhya Pradesh, we are planning to set up a food park and expand our existing logistics network with silos, warehousing, and multimodal logistic parks at 6 locations, which are Dhar, Guna, Damo, Ujjain, and 2 sites here in Indore. These projects will see us investing around 5,250 crores. As the second largest cement manufacturer in the country, we have big plans in Madhya Pradesh. Today, we have only one plant in Katni, but that will change. We will invest additional rupees 3,500 crores to set up 3 more plants in Ametha, Devas, and Bhopal, to almost triple our cement capacity to 7.5 million tons per annum. I'm also pleased to announce that we expect to commission the plant in Ametha this year itself. In line with our commitment to equitable energy transition, we will invest close to rupees 39,000 crores in renewable energy, including manufacturing of solar and wind, and setting up a major pump storage hydro project. We will also invest another rupees 15,000 crores on our ongoing capacity expansion project at the Mahan Energen thermal power plant, where we plan to increase our capacity by 1,600 megawatts for meeting India's ever-changing hunger for reliable, affordable baseload power. In closing, let me touch upon our social outreach in Madhya Pradesh. Inclusive growth, or growth with goodness, has always been our guiding philosophy. Through the Adani Foundation, our assertive programs in education, healthcare, nutrition, water conservation, and skill development, we are already benefiting over 150,000 people in Singrauli, Katni, Vidisha, and Nimrani districts. And we will keep expanding our social coverage. Honorable Chief Minister, I must say that these great strides in every sphere of the state's development have all been possible by your vision to build Madhya Pradesh into our nation's most business-friendly, socially equitable investment destination. Your tireless work for the people's welfare, your unfailing politeness, and your unique ability to simultaneously focus on industrial development and social growth have opened the doors of the state to the world of progress. On behalf of the Adani Group, I thank you for your inspiration, guidance, and support as we do our little bit to help write the Madhya Pradesh growth story. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your optimistic views on the growth of Madhya Pradesh and the future footprints which you are going to be casting. And now, ladies and gentlemen, would like to take the privilege and honor of requesting and inviting our distinguished guest of honor, the Honorable President of Suriname, His Excellency Chandrika Prasad Santokhi ji. Thank you. Chief Minister Shivraj Singh
Chauhan, President of Guyana, Honorable Excellencies, distinguished ministers, distinguished guests, and a special welcome to the business community from India and all over the world. Ladies and gentlemen, आदरणीय उपस्थित भाई और बहनों, मेरा तरफ से नमस्कार. Good afternoon. I am pleased to deliver the keynote address at this Global Investors Summit. And I believe this Global Investors Summit fits perfectly with the Pravasi Bharatiya Divas, as both have the same goal to optimize the potential of the Indian diaspora. I congratulate the Chief Minister, the Honorable Shivraj Chauhan, who I met personally yesterday, with his vision to make Madhya Pradesh to what it is today. Let us all take this success story and the promising future of sustainable development and growth. Chief Minister, together with your team, you have delivered a model that is both innovative and forward-looking. With the financial, economic, and most of all, the social foundation with the specific roles and responsibilities for the youth and women, you have laid the foundation for improved and sustained economic development. Mr. Chief Minister, you have understood well that sustainable development is not achievable without a solid partnership between the public and private sectors and without targeting investment in the social and physical infrastructure. Ladies and gentlemen, we live indeed in challenging times with a deepening crisis in Eastern Europe affecting the world as a whole and the potential to set major economies back for years. Add to this the impact of COVID-19 pandemic, the debt burden in many small developing economies, the effects of climate change, the limited access to investment financing, etc., then you will understand that many countries face a dire financial economic situation. At the same time, any crisis brings about opportunities that need to be seized with confidence. For example, global financial investment flows have been rerouted from Europe to Southeast Asia. Ladies and gentlemen, production and productivity levels could have an enormous improvement and have led to access to global markets and competitive prices. I'm therefore not surprised that India is in the chair of G20 summit, having taken over from another emerging economy, Indonesia. The theme chosen by India, one world, one family, one future, says it all. Vasudeva Kutumbakam. I wish Prime Minister Narendra Modi all the success in the world in providing solid and visionary leadership and thereby not forgetting the small developing economies. I'm convinced that he, as G20 chairman, and India will lead the way towards a more just and correct international system, both from a political and economic perspective. India's chairmanship of the G20 is undoubtedly an opportunity not to waste, but to pave a future road in the global financial architecture. It is a global platform to resolve current issues that hamper the growth of our economies. My country, Suriname, therefore supports India in its bid to a non-permanent seat in the United Nations Security Council at the United Nations.
India's role in the world is increasingly becoming important and recognized. India and the Indian diaspora has made its entrance in the global and national corporate world for a while now. But lately, we have seen an increase in the selection and presence of Indians in leadership positions in many large companies. This opens up opportunities which we must take advantage of and utilize for the further development of our countries. The diaspora business community must be involved in taking our economies to a new level of social responsibility and sustainable development of our societies in the future. In this regard, I'm delighted that the Caribbean region is represented at this event by both Guyana and Suriname. Our presence here only underlines our commitment to strengthening the synergies between our countries and the regions to forge partnership and build long-term cooperation. Both countries have been blessed by proven oil and gas resources in the billions. With good management, they can jumpstart our economies to a new level of development. Suriname stands on the cusp of promising developments in the oil and gas industry. As we are all aware, the future of oil and gas industry in light of climate change is a topic of significant debate and uncertainty. Some believe that the industry will not continue to play a significant role in the global energy mix for the foreseeable future. However, ladies and gentlemen, I don't see it in this way. While there are alternatives to fossil fuels such as hydrogen, biogas, solar energy, wind energy, propane, and natural gas, specific applications such as aviation and shipping cannot fully make use of this at this moment. Still, these applications look for another alternatives, how they can cut the impact on the climate, and therefore I believe that industry will continue, but in a green way, in an environment-friendly manner, with more advanced technology. Ladies and gentlemen, in December 2022, we had the first joint business council between the private sectors of our countries in preparation of this event, in which Suriname highlighted the areas of interest for cooperation. These include agriculture and agro-processing, aquaculture, manufacturing, research and development, business process outsourcing, the chemical industry, mining, wood processing, energy, pharmaceutical industry, tourism, and hospitality. Yet, trade between Suriname and India is modest. There is still much to be done to encourage trade and investment between both nations, including dealing with issues like air and maritime transportation, business visa requirements, foster more cooperation in the fields of education and cultural exchanges, enhancing the ease of doing business, and exploring new opportunities. Our Suriname Investment Trade Agency, SITA, will be the government's single point of entry to guide foreign investors through the process of establishing their company in Suriname. We stand ready to welcome you. Suriname will facilitate Indian companies to set up businesses in Suriname and serve the wider region, including CARICOM and the Central South America, a market of 600 million people. With a growing middle class, we can be the supply chain hub for you for this region. You are part of our community as much as we are part of your community. The government of Suriname is committed to encouraging the development of business relations between Suriname and India. We are willing to provide all necessary support
to enhance trade between the two countries. To take advantage of these opportunities, the business communities of both countries need to work together and shape the South-South relationship between them. Mr. Chief Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, my government is open for business and willing to provide incentives to investors. My government is in the process of promoting the ease of doing business and removing barriers, impediments, and bureaucracy in doing business. My government is supporting the public-private strategy and is designing an investment-friendly environment for the business community. I wish all participants success in their quest to expand their business and connect with fellow persons of Indian origin. Creating valuable wealth, responsibility, therefore not only improving the lives of the Indian diaspora, but also the world community. It was indeed an honor to visit Madhya Pradesh, to take part in several Pravasi Bharatiya Divas meetings, to witness the cultural diversity and to enjoy the cuisine. But very important for me was the connect with Indian business and the business community. We all can make a difference in the world. You can make the difference. Yes, we are the difference. In a balanced and responsible manner, by combining our long-standing religious and spiritual fundamental norms and values with modern concept of market management and production, we are changing the world. The private refinery company, Reliance, I visited during my trip, is changing the world. The smart city, the cleanest city, Madhya Pradesh, is changing the world. We see this happening here in India and everywhere in the world, every single moment. If you want to change the world, be the change. Thank you, and may the Almighty God bless you all and success with your meetings. Thank you very much. Dhanyabad. Thank you very much, Honorable President, sir, for your very deep insights into many challenges which the world is facing and wherein the leaders of the world have to join together in combating them, and showing your faith and confidence in Madhya Pradesh and India to be the leaders of change. Thank you, Honorable President, sir. And now I would like to request His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali ji, हमारे गयाना के माननीय राष्ट्रपति जी. Thank you very much, my dear friend President Santoki, Prime Minister Modi, Union Ministers, Chief Minister and members of the Madhya Pradesh Cabinet and Government, distinguished ladies and gentlemen. This afternoon, I do not intend to speak to you on what we already know. Right here in this room, we have some of the most transformative companies in the world. Companies that have established global footprint. They have done it. They have proven to the world that they are successful at what they do. And I think we ought to applaud the Indian private sector for the role they are playing in world development. But none of this could have occurred without the right ecosystem, the right investment environment, the right policies and programs to stimulate the investment and growth. And that is where the role of good governance and good policy making comes in. And we must applaud the government of India, and here in Madhya Pradesh, his chief minister and his cabinet, for the type of policies and programs they have instituted to ensure this growth and development that we are seeing. You know,
Many of you may look at my own country, Guyana, and say we have a very small population. I want to position to you this morning that that is true. But also remember that the UAE and Qatar, look at their population and look at where they are today. By the grace of God, we have been blessed with the same resource and a bit more in our natural resources. And with that resource that is available now to us, we intend to position Guyana as a global leader in many areas. We are humble about our approach to growth and development. We are humble about our approach to the transformation of our society and our people. And we understand that we have a global responsibility. We have a responsibility to ensure that our growth and development is balanced and promote a world that is safer, a world that transitions itself into one in which the planet will be a better place in which all of us can live. Indeed, India is demonstrating to the world with innovation, technology, human resource transformation, good policy, strong global leadership, that they are ready and willing to lead in this revolution. And that is why it is in that context that this investment forum is critical for us. I invite the world to visit Indore and have a physical demonstration as to how transformation has led to the cleanest city in India. You want a real-life experience, come here and see it for yourselves. I have seen it. You want an experience to see what dynamic leadership, good policy making, and a conducive eco-investment environment is, come and speak to the Chief Minister of Madhya Pradesh and his government, and you'll have an experience of what that is. Today, many of the companies here will come together under one roof. I urge you not to seek to win alone, but to seek to create a win-win environment in which you can build partnership, in which you can form consortiums, in which you can look at untapped areas. And I can say maybe in this investment forum, on a per capita basis, Guyana may have the largest delegation here at this investment forum, on a per capita basis. And I've urged the private sector of Guyana to ensure they form partnership and build consortium to unlock the potential that exists within our country. We need the technology, the human skills, and of course the capital. But not only in an outward way. Here in this great state, there are opportunities for even our local private sector to participate. And we have urged, and we're working with the Chief Minister and his government in outlining a clear, definitive strategy in an MOU in areas of cooperation that we want to work with the state on in building private sector, all of which must be driven by the private sector, supported by strong signaling from the government of India, this state, and the government of Guyana that we are ready to marry the private interest in stimulating growth and advancement of business opportunity. If you use a recent example of the pandemic, many of you may say we are so far apart. We are so far apart in establishing businesses. But the COVID-19 pandemic taught us a very important lesson as to how close we are to each other. In one sweep, one pandemic, one virus affected the entire world, the entire global system, the entire economy. Why is it with the type of capability that we have in technology, we can develop an ecosystem that can also affect the world in a clean sweep with the right environment and policy framework? And this is where India must provide leadership. This is where the industry leaders who are here must look at establishing a new framework
through which you can create this leadership. Today, there is need for a new global investment order. A new global investment order that seeks to create a win-win situation between states, that seek to harmonize strategies and policy making, that seek to have greater market integration, that seek to have greater people integration, that seek to create a more balanced, compatible policy environment, and one in which we can match our strategies of development. Guyana, India, and this state that we are in today, when you look at the commonality of the vision and the goals that we want to achieve, we can have a clear match of strategy, a clear match of policy that gives the private sector the level of predictability and comfort that they require to make long-term investment. And that is why the policymakers are important to these forums. We are embarking on building the services sector in Guyana and in the region. The CARICOM region, or the Caribbean region, may seem small in population, but it is the most influential tourism market in the world. This market requires people, services, financial services, hospitality services, health services, educational services. India, you are positioned in a way better than any other to be the leader in the provision of these services to support the ecosystem. And I invite you to look at the opportunities as it exists in positioning yourself as the strongest player in providing human resource capacity, capability, and competence in servicing these industries in the region. Our aspirations align in technology, food production, energy security, human resource development, natural resource, climate change, security, and of course, I want to spend just a few minutes on outlining to you how Guyana is advancing itself, not to be a player, but to be an important cornerstone in every single area that I've just mentioned. In relation to climate services, our forest stores 19.5 gigatons of carbon. As a country, all of our carbon in that forest is now R3 certified, which means that entire carbon footprint is now available for sale. It has been certified even to be used in the greatest sector, the aviation sector. As a small country, we have recently signed the first and largest deal on the global market for carbon credit with an end user, and much more than that, an end user who's an oil company, Hess Incorporation. We are positioning ourselves to be a leader on climate services, ecological service, biological services. And we invite you to be part of this transformation. Much more than this, because of our rich arable lands, abundance of fresh water, and our geographic positioning, we have the capability and the opportunity not to be a player, but to be the leader in food production and food security for the region in which Guyana sits. And we invite the Indian private sector to look at this opportunity that gives them access to a market of more than 400 million people. We have all the investment vehicle tools that you have here, and we are ready to deploy it
so that you can position yourself in a new market that offers exciting opportunity. Our global strategy must see this integration. In another 2 years, we should be producing 1.2 million barrels of oil per day. 1.2 million barrels of oil per day. And there is a moral question that the world asks: how long would be the life cycle of oil in this new global scenario? And I want to ask a different question. It is clear that oil will still play a leading role in the foreseeable future. But who determines who must produce that oil? There is a great policy environment that we now operating in which new financing for oil investment is being trapped in an environment that see the cost of financing very high and maybe not even available. But isn't this protecting a monopoly that exists already? And isn't this creating an environment in which newcomers to the sector are placed at a disadvantage? It's a moral question. It's a moral question. So our policy is very simple. We must exploit this resource as fast as possible in ensuring that the revenues that come build an economy that is strong, resilient, and sustainable on many and standing on many other pillars in a world 2030 and beyond. The world 2030 and beyond is going to be a much different world than we see today. Unless we reinvent ourselves and reposition ourselves in governments and in the private sector, we will not be able to build an ecosystem around our businesses that can compete in a world 2030 and beyond. The world 2030 and beyond, as we heard, will see India in the top 3 economies in the world. How are we preparing ourselves to function in that world? How are we extending our global footprint in this new evolution of things? And I want to give the example of cricket, because all of us love cricket. But it's a very serious example that requires a lot of inward looking. We are working on a plan now to position Guyana as a major destination for world cricket. I've recently brought in Sir Clive Lloyd, and I'm working now, negotiating with a major Indian cricketing name to position Guyana as a mecca of cricket in the geographic location we are in, close to North America, close to the US and Canada. I want to remind the Indian Cricket Board that not so long ago there were other powers who were the big players and movers of cricket. Because of innovation and forward planning, you have been able to take that position in global cricket. But if you do not continue to innovate and position yourselves, you'll be making a big mistake. One of the biggest mistakes that these powers of cricket made was to have too much inward-looking policies, trying to capture only a segment. I offer you the opportunity to make Guyana your next investment destination in building out the cricket product. Guyana is the home now for the CPL finals for the next 3 years. How can we build a product that will bring in the North American market in an environment that is close to the market? We as a government are willing to invest in the infrastructure. We as a government are willing to invest in the ecosystem to support this. You have the power to do it. And I extend this invitation to you to do it with us. We are ready to do it with you. As we work together
in promoting a world in which we want to see a difference. Today we have an auction that is advertised internationally for 14 more oil blocks, and of course investment in gas. I invite the Indian private sector to take this opportunity and participating in these auctions. I invite you to work with us as we build an economy that is standing on many pillars: health and educational services, infrastructure transformation, climate services, energy security, not only for Guyana but for the entire region, food security, and human resource transformation. Together we can make everything possible. The great leadership that India offers the world is based on the exceptional human resource pool that you have. It is based on the exceptional innovation and technology that you deploy globally. I offer you Guyana as a geographic space in which you can expand this reach. I thank you, and God bless you. Thank you very much, Honorable President, sir, for your very encouraging, inspiring, and motivating address, inspiring, motivating everyone towards a shared effort, shared growth, and shared prosperity. And ladies and gentlemen, I would now like to request Shri Nadir Godrej, the Chairman and Managing Director, Godrej Industries Limited, for his views and commitments. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Their Excellencies, the Presidents of Guyana and Suriname, it is a real pleasure to be at the MP Global Investor Summit 23. And of course, I'm truly delighted that I've been cordially invited as a special honored guest to a state that aspires to be the best. MP is indeed the central state. Its recent progress has been great. Now, ever since our liberalization, we've had rapid growth in our nation. This is a fact that is well known, and the Godrej Group has also grown. A major investment was therefore done in Malanpur way back in '91. Till now, the investment several hundred crore. This year, we've added significantly more. For GCPL, Godrej Consumer Products, this is a major base, and it could well be the case that as we look for an expansion site, Malanpur itself might prove to be right. Indeed, if we are enticed to go there, Malanpur could have the lion's share. I'm sure you think it's very nifty that our employment is 1,250. Now that we will add on hair creme, we'll employ 75 more of them. 2 lakh farmers' needs are met by our Godrej Agrovet. Godrej Capitals in MP for sure. In fact, right here in Indore. In Bhopal, they will soon expand. Their property loans will be on hand. And in MP, I'm sure we'll see steadily increasing activity. In the past, whatever we have sought, we did receive good support. In the future, too, we're very sure this good support will endure. The progress has been very steady, but now MP is future ready. Our CSR takes us quite far, and Madhya Pradesh is the star, and here we are really ahead with our program called Embed, Elimination of Mosquito-Borne Endemic Disease. With this program, millions can get a release. On rapid progress, we're always bent. The reduction in cases is 70%. Malaria and dengue we need to sap. A useful tool is our treatment app. A lot of progress is what we see. Many of our villages are malaria-free. 9,000 beauticians have been skillfully trained. A steep jump in income has all been clearly gained. With training in sanitation, waste management and hygiene, improved health parameters have clearly been seen.
Our CSR team, I'd like to applaud for the CSR Universe Social Impact Award. 2022 for health and sanitation, an important priority for our nation. Our Malanpur plant aspires to be clean. Most of our energy we'd like to be green. In time, this will be eminently doable. 30% is already renewable. But as we add biomass cogeneration, 3/4 of our energy is our aspiration, so we'll be largely clean, not at all dirty, and we'll do it well before 2030. A strong relationship is what we see hand in hand. Let's proceed. Godrej and MP. Thank you. Thank you very much, sir, for your very poetic and emphatic expression on the faith and confidence in Madhya Pradesh. और देवी सज्जनों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए मैं सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की कविता की 2 पंक्तियां यहाँ पर कहना चाहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो जो मुश्किलों का पहाड़ है, वो जो मुश्किलों का पहाड़ है, वहीं तो मेरी हौसलों की मीनार है। और यही हौसले हैं और यही बुलंद इरादे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिसने इस प्रदेश को बीमारू राज्य से अब एक फ्यूचर रेडी स्टेट बना दिया है। तो आइए आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को, उनके दृष्टिकोण को और उद्योग के लिए उनके संदेश को। आखिर सुनने की भी सीमा होती है। देर हो गई लेकिन मामा भी बोलेगा। हमारे बीच उपस्थित प्रेसिडेंट ऑफ गयाना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मैं माफी चाहता हूं, भरा पूरा मंच है, लेकिन अब समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं सबको नाम से संबोधित करूं। आप भी सहमत होंगे, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हिंदुस्तान के चमकते हुए सितारे उद्योग जगत के यहां बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे सभी जिन्हें देश का गौरव बढ़ाया है उद्योगपतिगण, और यहां केवल भारत के नहीं, मुझे बताते हुए खुशी है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सचमुच में ग्लोबल है। 10 पार्टनर कंट्री, जापान, कनाडा, नीदरलैंड, गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम, पनामा, फिजी। गयाना और सूरीनाम के तो माननीय राष्ट्रपति जी आए, लेकिन पनामा की विदेश मंत्री, मॉरिशस के वित्त मंत्री, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, जिम्बाब्वे के खनिज मंत्री, वो भी इस समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 33 देशों के या तो एम्बेसडर हैं या काउंसलेट जनरल हैं। 84 देशों के 431 अंतरराष्ट्रीय बिजनेस डेलीगेट्स आए हैं। 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और 10 बायलैटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस समिट में शामिल हैं। मित्रों, यहां 1-to-1 भी आपके बीच भी होगा, बायर सेलर मीट भी है, और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में 15 देशों ने स्टॉल अपने लगाए हैं। बायर सेलर मीट के भी 364 अंतरराष्ट्रीय वायर समिट में आ रहे हैं। तो सचमुच में ये इन्वेस्टर समिट ग्लोबल है, ग्लोबल। और भारत का सोच तो हजारों वर्ष पहले से ग्लोबल है। हजारों साल पहले इस देश ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन विद्वान उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। यहां वसुदेव कुटुंबकम की बात हो रही थी। भारत ने हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का है, जो विशाल हृदय के होते हैं,
वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये सारी दुनिया एक परिवार है और इसलिए दुनिया भर के 84 देशों से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे जब उद्योगपति मित्र बोल रहे थे तब वो चर्चा कर रहे थे पहले मध्य प्रदेश कैसा था, विशेषकर फिरोदिया साहब बहुत पहले से यहां थे। उन्होंने बताया कि टूटी फूटी सड़कें, ये बात सही है कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। मैंने एक बार अमेरिका में कहा और इंदौर के सुपर कॉरिडोर को देख के कहा था कि हमारी सड़कें तो अमेरिका से अच्छी हैं, तो कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया। और हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है। कल हमारे जो प्रवासी भारतीय आए थे उनमें से अनेकों ने कहा, लंदन वालों ने कहा इंदौर की सड़कें तो लंदन से ज्यादा अच्छी है। हम नहीं कह रहे, अब लोग कह रहे हैं। इंदौर 6वीं बार क्लीनेस्ट सिटी है और ये 6वीं हमारी इन्वेस्टर समिट हो रही है। मध्य प्रदेश भी क्लीनेस्ट स्टेट है हिंदुस्तान की, हम सबसे स्वच्छतम राज्य है। एक जमाना था जब सचमुच में मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट था, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। अब हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले केवल 3.6% था, 3.6%, अब बढ़कर हो गया 4.6%। कभी हमारी कुल जीएसडीपी हुआ करती थी 1 लाख करोड़ के आसपास, आज 12 लाख करोड़ के पार निकल गए हैं। पर कैपिटा इनकम कभी मध्य प्रदेश की थी 13,000 रुपया, अभी बढ़ के 1,37,000 हुई है। लेकिन इससे हमें चैन नहीं है, संतोष नहीं है, इसलिए तो हम दिन और रात काम कर रहे हैं। इससे आगे और आगे हमें ले जाना है। मित्रों, हमारा एक्सपोर्ट इस साल 60,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। लगातार हम आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उसके विस्तार में समय के कारण नहीं जाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश क्यों, वैसे गयाना भी हमारा है, सूरीनाम भी हमारा है, अब हम भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये प्लेटफॉर्म है सबको मिलाने का। भारत में इन्वेस्टमेंट आए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हिंदुस्तान को 2026 तक। हमने तय कर दिया मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे और इसलिए दिनों रात हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर सुविधाओं की दृष्टि से आप देखें तो नंबर 1, मैं बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, हमारे पास उद्योगों के लिए जमीन की पर्याप्त उपलब्धता है। 2 लाख एकड़ का लैंड बैंक है हमारे पास और यहां जो इन्वेस्टर आए हैं वो मैप पे उंगली रख के हमको बता दें कि यहां जमीन चाहिए, हम उनको 24 आवर्स में आवंटित करके दे देंगे। कोई दिक्कत और परेशानी नहीं, पर्याप्त जमीन है हमारे पास। कोई जमाना था जब बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन अब 24/7 पावर है हमारे पास। मध्य प्रदेश में 25,800 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता है, उपलब्धता है। और तो और दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। रीवा सोलर पावर प्लांट दिल्ली की मेट्रो को बिजली देता है। आपको जितनी बिजली चाहिए हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज है पानी, रहीबन पानी, राखिए बिन पानी सब सून, और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे, सेमीकंडक्टर फैब, इनमें पानी बहुत अधिक लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा सहित सदा बहने वाली नदियां हैं और नदियों के जल को भी हमने समुद्र में नहीं जाने दिया, जगह जगह बांध बना के रोक दिया है। जितना पानी चाहिए, मध्य प्रदेश पानीदार प्रदेश है, पानी की कोई कमी नहीं है हमारे यहां। एक बात और, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शांति का टापू। एक जमाना था
जब चंबल के बीहड़ों में डकैतों का आतंक था। जब हमने सरकार बनाई तो साफ कह दिया मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 1 साल में सारे डकैतों का सफाया हो गया था। उसके बाद से डकैत पनप नहीं पाए अब कभी भी। यहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं है, बहुत बेहतर है। अब इंदौर में हमने प्रयोग किया 24 घंटे दुकान खोलो जी, सराफा हमारा 24/7 जैसा खुलता है। रात को 2 बजे जाते हैं लोग सराफे में खाने। कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं, शांति का टापू अपना मध्य प्रदेश। फिर एक बड़ी बात, स्किल्ड मैन पावर मध्य प्रदेश में उसकी कोई कमी नहीं है। एक तो हमारी जनता बहुत अच्छी है जी, सचमुच में न कोई पूरब का है, न कोई पश्चिम का है, न कोई उत्तर का है, न कोई दक्षिण का है। जो मध्य प्रदेश में आता है वो बस मध्य प्रदेश का होके रह जाता है, जैसे दूध में मिल के शक्कर एक हो जाती है। हर एक को सहयोग करने का काम करते हैं हम, और इसलिए यहां कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होती। स्किल्ड मैन पावर हमारे और नहीं है तो हम तैयार कर देंगे जी। ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं भोपाल में। हमारी ITI को आइडियल बनाने का हमने प्रयास किया है, और उद्योगों से हमने कहा है कि अगर आप चाहें तो आए, जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए सरकार के साथ मिलकर तैयार करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो बैठे हैं मंच पे और नीचे, ये मध्य प्रदेश के विकास के भागीदार हैं। लेकिन ये सब चीजें हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना हो तो भी बड़ी दिक्कत होती है। समिट में तो कह देते हैं आओ स्वागत है, और एक बार आ गए तो कई बार फंसा हुआ महसूस करते हैं कि कहां फंस गए। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, गुड गवर्नेंस की अभी रैंकिंग हुई हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश का स्थान नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी आपको सपोर्ट करती। मेरे मंत्री बैठे हैं, ऊपर भी बैठे हैं राज्यवर्धन दत्तिगांव, नीचे भी मंत्री यहां उपस्थित है। अभी सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन होंगे अलग अलग सेक्टर के, मंत्री खुद आपको सहयोग करेंगे, अधिकारी आपको खुद सहयोग करेंगे। परेशान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और मध्य प्रदेश में इसके आगे जाके देखें तो मैं केवल CM नहीं, CEO भी हूं मध्य प्रदेश का। हर सोमवार को, एवरी मंडे, मैं मिलने के लिए उद्योगपतियों से स्वयं भी समय अलग निकाल के रखता हूं। यह अद्भुत प्रदेश है सचमुच में मध्य प्रदेश। यहाँ जन संपदा, यहाँ वन संपदा, यहाँ खनिज संपदा। खनिज संपदा की बात करें तो अलग अलग खनिज मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। यहाँ हीरा है, यहाँ कोयला है, यहाँ डोलोमाइट है, यहाँ लाइमस्टोन है, यहाँ मैग्नीज है। एक नहीं अनेकों खनिजों का भंडार मध्य प्रदेश। 310 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ। 10 फूड पार्क्स हैं, 5 IT सहज हैं, 2 स्पाइस पार्क हैं, 2 प्लास्टिक पार्क हैं, एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बन रहा है, एक पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन हम बना रहे हैं, 4 IT पार्क और बना रहे हैं। इसके अलावा EV पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट यूनिट्स के लिए प्लग एंड प्ले जोन, सेमीकंडक्टर पार्क, और अगर कुछ बनवाना हो तो बता दो, वो भी हम बना देंगे। हम तैयार हैं, क्योंकि जो है केवल उसी की बात नहीं कहेंगे, जो चाहिए उसकी भी बात कहेंगे, क्योंकि हमें करना ही है। निवेश की दृष्टि से अभी आपने देखा, हमारे उद्योगपति मित्र स्वयं बता रहे थे, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। हमारे फोकस के सेक्टर्स भी आपके सामने आइए। 251 खदानें हैं हमारे यहाँ, सिलिका, लाइमस्टोन। और एक बात और राज्य की बता दूं, मध्य प्रदेश में कई स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स का उत्पादक है। यहाँ कई ऐसे रॉ मटेरियल्स उपलब्ध हैं जो रक्षा और एयरक्राफ्ट के उपकरण बनाने में उपयोगी हैं, जैसे कापर, मोलिब्डेनम, रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम और प्लेटिनम जैसे रेयर मेटल्स की संभावनाओं को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से अगर देखें, एग्रो प्रोसेसिंग की दृष्टि से मध्य प्रदेश को देखें तो 11 हमारे यहां जलवायु क्षेत्र है और भारत की खाद्य राजधानी के रूप में उभरा है मध्य प्रदेश। एक जमाना था जब हमारे पास गेहूं की शॉर्टेज होती थी, लेकिन आज
पिछले साल ही 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा था और इस साल हमने 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। वो तो भारत सरकार ने रोक दिया कि नहीं अब एक्सपोर्ट नहीं करना है क्योंकि देश में जरूरत है। नहीं तो गेहूं के भंडार हमने भरे, चावल के भंडार हमने भरे, सोयाबीन, सोया स्टेट है मध्य प्रदेश। अलग अलग क्षेत्रों में जबलपुर का मटर, बुरहानपुर का केला, इंदौर के आलू, नीमच मंदसौर का लहसुन, निमाड़ की लाल मिर्ची, अलग अलग उत्पाद देखिए हर क्षेत्र में अलग अलग उत्पाद। कहीं हमारा संतरा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संतरा उत्पादक अगर राज्य कोई है तो मध्य प्रदेश है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें, मुरैना भिंड की सरसों, पीला सोना, जो चाहोगे वो मिलेगा। और हमने तय किया है, मैं अपने, अरे कॉटन तो है ही और कॉटन भी ऑर्गेनिक कॉटन अपने यहाँ है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेक्सटाइल वाले, गारमेंट्स वाले इसलिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि जितनी बेसिक सुविधाएं चाहिए सब मध्य प्रदेश की धरती पर है। और एक बात और हमने की, हमने कहा भैया गेहूं ज्यादा मत उगाओ, बाकी चीजें भी उगाने का काम करो। तो हमने कृषि फसलों के विविधीकरण के लिए एक योजना बनाई जिसमें हमने तय किया कि उद्योगपति अगर आता और कहता है कि मुझे फलाना उत्पाद चाहिए, कृषि उत्पाद, तो किसान से बात कर ले। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहां हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। बताइए क्या उगाना है, किसान से बात कीजिए, पहले से रेट तय हो जाएगा। आप जिस क्वालिटी का कहेंगे उगा के हमारा किसान देगा और आपकी जरूरत को पूरा करेगा। सरकार, किसान और निवेशक तीनों मिलकर काम करेंगे। निवेशक को भी हम पैकेजिंग जैसे मामलों में जैसे वैसे आर्थिक सहायता देते वैसे देने का काम करेंगे। और इसलिए बड़ी कंपनियां कई हमारे यहां काम कर रही है, आगे भी हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर को मैं बधाई दूंगा मध्य प्रदेश को, कोविड में भी इनने अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं की क्योंकि उस समय दवाई की जरूरत थी। तो अब फार्मा सेक्टर बहुत रिच है मध्य प्रदेश में। टेवा, एससीजी, मैक्लियार्ड्स, पार, अरिस्टो, सिम्बायोटेक, अल्केम, अजंता, ग्लेनमार्क, पीरामल, सिप्ला, सब कुछ तो मध्य प्रदेश में है। गयाना और सूरीनाम को जितनी दवाई चाहिए मध्य प्रदेश सप्लाई कर देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन भी सप्लाई करने का काम किया है। ये चमत्कार हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है कि भारत ने 10 महीना में वैक्सीन बना के भारत में भी लगा दी और दुनिया के 100 देशों में भी भिजवाने का काम किया है। हमारे यहाँ फार्मेसी कॉलेज 110 से ज्यादा है, मेडिकल कॉलेज 35 हैं और खोलने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ है, मेडिकल प्रोफेशनल्स 10,000 से ज्यादा हमारे यहाँ है। हेल्थ केयर की दृष्टि से कई बड़े अस्पताल आ रहे हैं। और हमारी, मैं केवल लाने की बात नहीं करता, डेडिकेटेड स्वास्थ्य नीति के माध्यम से हम आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब्स निर्माण करने के लिए हमारे यहाँ सुविधा दी जाती है। अनेकों निजी क्षेत्र आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल की बात यहाँ काफी विस्तार से कही गई है, इसलिए बहुत विस्तार में मैं उसके नहीं जाऊंगा। अकेले पीथमपुर ऑटो क्लस्टर में 25,000 लोग कार्यरत है। जो आवश्यक सपोर्ट इंफ्रा चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, इंडो जर्मन टूम रूम हमारे यहाँ है, द सेंट्रल फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ है, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक हमारे यहाँ है, नेटट्रैक्स हमारे यहाँ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की वैल्यू चेन के हर स्तर जैसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और सहयोगी इकाइयां हमारे यहाँ स्थापित है। और अब तो ईबी का मैंने बताया वो भी हम स्थापित कर रहे हैं। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स में मेरी रुचि इसलिए है कि सबसे ज्यादा रोजगार देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। और मध्य प्रदेश में बेटियां और बहनें आगे बढ़ के काम करती है। 3-3 शिफ्टों में हमारे यहाँ काम होता है। 24/7 कारखाने के चक्के चलते रहते हैं, कभी काम बंद करने की वहां जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के लूम्स कार्यरत है। वीविंग के क्षेत्र में टेक्निकल टेक्सटाइल श्रेणी के अंतर्गत भी हम तेजी से उन्नति करने का काम कर रहे हैं। अभी हम रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में भी 4थे स्थान पे, लेकिन जल्दी पहले स्थान पर आना है। उस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो बड़े गारमेंट उद्योग हैं उनको आकर्षित करने के लिए हमारे पास विशेष रेडीमेड गारमेंट पॉलिसी है, जिसमें गारमेंट इकाइयों को 200% तक के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। और
इसलिए और 50 करोड़ से अधिक के निवेश पर गारमेंट उद्योगों को मेगा स्टेटस देने का भी प्रावधान किया है। स्किल डेवलपमेंट हेतु अप्रैल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर ग्लोबल स्किल पार्क हमारे यहाँ मौजूद है। आईटी की तो कई कंपनी जैसे बहन मेनन बता रही थी, हमारे यहाँ देखो आईटी में क्या चाहिए, यहाँ स्वच्छता है, अकेले यहाँ नहीं है, इंदौर तो है ही स्वच्छता में सरताज, लेकिन इंदौर के अलावा भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है देश की राजधानियों में, राज्यों की राजधानियों में। यहाँ स्वच्छता, यहाँ हरियाली, यहाँ सेफ्टी, यहाँ शांति, यहाँ ईज ऑफ लिविंग, और क्या चाहिए आईटी के लिए। इसलिए आईटी की अगली डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश ही है मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं। और आपने देखा टीसीएस, इन्फोसिस सब मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हमारे यहाँ 4 आईटी पार्क, 5 आईटी एसजीएड है, इकोनॉमिक कॉरिडोर इंदौर पीथमपुर हम विकसित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ 500 एकड़ कमर्शियल भूमि पर प्लग प्ले एंड इंफ्रा का निर्माण किया जाएगा। और रेंटल अगर देखें तो बाकी शहरों की तुलना में 7 से 10 गुना तक रेंटल दरें हमारी कम हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इनमें हमारे आईटी पार्क है। भोपाल और जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की हमने स्थापना की है। मैं और बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन विशिष्ट नीति के माध्यम से आईटी बीपीओ कंपनियों को आकर्षक सुविधाएं, यहां से रियायती दरों पर भूमि, कैपिटल सब्सिडी, ट्रेनिंग सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन छूट, ये सब हम देते हैं। और कोई कस्टमाइज पैकेज चाहिए तो आपका प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, उस पर भी हम विचार कर लेंगे। अपनी टीम के साथ हम बैठते हैं, विचार करते हैं, और अगर कोई छूट या सुविधा देनी होती तो वो देने का काम करते हैं। डिफेंस के सेक्टर में मुझे कहते हुए गर्व है, जबलपुर, ग्वालियर, इटारसी, कटनी में डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन और अनुसंधान के कई उपक्रम संचालित है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फाउंड्री, गन कैरेज फैक्ट्री स्थापित है। और भारत की सबसे पहले स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट इकाई अडानी डिफेंस एवं इजराइल वेपन्स इंडस्ट्री का संयुक्त उपक्रम राज्य में स्थापित हुआ है। और इसलिए डिफेंस के सेक्टर में भी हम इकाइयों को विशिष्ट नीति के माध्यम से प्रोत्साहन की सुविधा देते हैं। नवकरणीय ऊर्जा में तो हमने धरती तो छोड़िए जनाब, बांधों की सतह पे भी सोलर पैनल बिछा रहे हैं। ओमकारेश्वर में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, बांध की सतह पे सोलर पैनल, ताकि धरती भी बच जाए और पानी भी भाप बन के ना उड़े, पानी भी बच जाए, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा। ये काम अगर कर रहा है तो मध्य प्रदेश का, मैं कह रहा था कि कैनाल्स पे अगर आपको सोलर पैनल बिछानी है तो आप आइए, स्वागत है आपका। उसकी नीति भी हम बना लेते हैं, बाकी बांध भी एक्सप्लोर कर लीजिए। जमीन पे क्या जनाब, पानी पे पैनल बिछाइए, मध्य प्रदेश तैयार है। और कई जगह हम इसमें तेज गति से काम कर रहे हैं। जीरो कार्बन प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है उसको पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को राज्य शासन द्वारा हम कई तरह की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, इंसेंटिव की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन के भी प्रोजेक्ट सबसे पहले लगेंगे तो मध्य प्रदेश की धरती पर लगेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पॉलिसी डिक्लेयर की गई है। अब मैं, भोजन का समय हो गया, वैसे काफी ओवर हो गया, इसलिए ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। टूरिज्म के अंत में बात जरूर करूंगा। देखिए जनाब, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, मध्य प्रदेश क्रोकोडाइल स्टेट है, और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी हो गया है। यहां नहीं थे तो नामीबिया से प्रधानमंत्री ले आए, अभी दक्षिण अफ्रीका से और आने वाले हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी होगा। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, हम चीता प्रोजेक्ट बना रहे हैं। श्योपुर जिले में चीते आए, वहां आसपास की सड़कें, रहने को रिसोर्ट चाहिए, होटल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कई तरह की सुविधाएं चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश चीते की रफ्तार से दौड़ना चाहता है प्रगति और विकास के पथ पर। आइए, चीता प्रोजेक्ट भी आप आके देखिए। हमारे यहाँ महाकाल महालोक है, मैं सच कह रहा हूं, जरूर देखिएगा, अद्भुत बना है। महाकाल महाराज के दर्शन भी कीजिए, अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र सचमुच में हमें भी प्रेरणा देता है।
आप में भी नई ऊर्जा आएगी। लेकिन उसके बाहर जो महाकाल महालोक बनाए, एक शिव सृष्टि की रचना की गई है। उज्जैन में होटलों में कहीं जगह नहीं है, लोग घरों में ठहरा रहे हैं, होम स्टे शुरू हो गया है। आइए वहां होटल बनाइए, रिसोर्ट बनाइए। इंदौर में जरूरत है, पूरे मध्य प्रदेश में। ओरछा में राम राजा विराजते हैं, तो मैहर में हमारी मैहर वाली शारदा मैया है, तो चित्रकूट में भगवान राम विराजते हैं। रिलीजियस टूरिज्म, देवास में चामुंडा मैया, तो सलकनपुर में विजयासन मैया। अलग अलग ग्वालियर हो, शनिचरा में शनि महाराज विराजते हैं। रिलीजियस टूरिज्म की संभावनाएं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाएं, हेरिटेज टूरिज्म की संभावनाएं अगर कहीं देखना है तो मध्य प्रदेश में देखिए। और इसलिए जिस भी सेक्टर में आपको निवेश करना हो, आप बिना टाइम गवाए आइए। देखिए मेरे मन में तो जिद है, जुनून है, जज्बा है। अब मुझे कोई कह रहा था कि तुम थकते नहीं हो क्या? थकूं कैसे? मध्य प्रदेश को और आगे ले जाना है। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो शिवराज को थकने का कोई हक है क्या? जब तक चीफ मिनिस्टर थक नहीं सकता तू सोएगा कैसे? 8.5 करोड़ जनता की बेहतरी की चिंता तुझे करनी है, और इसलिए अंदर से आवाज आती, चलता चल, चलता चल और चल, तब तक जब तक मध्य प्रदेश हिंदुस्तान नहीं दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक ना बन जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी तड़प बोल रही है। और इसलिए वैसे मैं सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि हम तो, मैंने पहले ही कहा कि भारत है जो दुनिया के सब देशों का आदर करता है, सबको अपना परिवार मानता है, और भारत मंगल कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यह हमारा मूल भाव है। और इसलिए सबके कल्याण की भी चिंता करेंगे। और इसलिए मैं एक बात और बता रहा हूं कि मैं रोज पर्यावरण के लिए भाषण नहीं देता, मैं 3 पेड़ रोज खुद भी लगाता हूं, उसके बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो हम पर्यावरण भी बचाएंगे दुनिया के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मेरी ड्यूटी है कि मध्य प्रदेश को तेज गति से आगे ले जाऊं, और उसका रास्ता जाता है निवेश से होकर। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज आपको मध्य प्रदेश की धरती पर हमने आमंत्रित किया है, आप आए। मैं सचमुच में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। हृदय के खोले हैं द्वार, आपका स्वागत बारंबार। लेकिन जाने के पहले निवेश पे चर्चा जरूर करके जाना। 1-to-1 मीटिंग में खूब करूंगा, दिन में करूंगा, रात में करूंगा, सवेरे करूंगा, शाम को करूंगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बाद में सोचने की जरूरत क्या है? इसलिए आइए बैठते हैं, सोचते हैं, मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं और आप भी बैठे हैं, मेरे मंत्री, मेरी टीम और आप भी बैठे हैं, और निवेशक आपस में भी साथ साथ बैठ के कई चीजें टाई अप करें। मैं विश्वास दिलाता हूं मध्य प्रदेश कभी आपको निराश नहीं होने देगा। विन विन सिचुएशन रहेगी। आप भी आगे बढ़ोगे, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे मत घबरा जाना कि निवेश निवेश की बात कर रहा है। अब निवेश के लिए नहीं तो घूमने तो आते ही रहना मध्य प्रदेश में। टूरिज्म की संभावना यहाँ है ही। आइए मित्रों, हम सब आगे बढ़ने के संकल्प के साथ इस समिट को आगे बढ़ाएं। पॉजिटिवली मध्य प्रदेश आपके हर प्रस्ताव का स्वागत करेगा, और हम आगे बढ़ के आपको हर संभव सहयोग देने का प्रयास करेंगे। आप सबका फिर एक बार स्वागत और अभिनंदन। अभी लंच की भी व्यवस्था है, हालांकि धीरे धीरे हाई टी का टाइम हो गया है, लेकिन अभी आपको लंच कराएंगे। फिर सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन होंगे, तो जिस जिस क्षेत्र में रुचि, 19 सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, उनमें भाग लीजिए। और फिर हम और आप मिलेंगे, आप और आप मिलेंगे, और नए प्रस्ताव तैयार करके आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को और देश को भी समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे, इस संकल्प के साथ कि 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। एक बार फिर स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, और आप सब भोजन पे आमंत्रित हैं।
Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for sharing your vision, your zeal, your passion, your commitment towards making Madhya Pradesh the #1 state and for a more investor-friendly, business-friendly Madhya Pradesh. और देवीय सज्जनों, कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित करती हूं हमारे कर्मठ विजनरी श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। As we stand to commence this important event, I would like to thank our Honorable Prime Minister who took out his valuable time. I would like to thank our Honorable Commerce Minister who took out his time. Of course, our Honorable Chief Minister, Honorable guests of honor, His Excellencies, Presidents from Guyana and Suriname, who spoke extremely well and told us how to go ahead. Ambassadors, Consul Generals and High Commissioners to India from 32 embassies, Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, all the investors who took out time from the busy schedule for discussing opportunities for investment and collaborations in Madhya Pradesh, domiciles of the cleanest city in the country, Indore, of course. Last but not least, all the fellow citizens who have been attentively following this summit through whichever media. My dear colleagues from the cabinet, there are my ministerial colleagues sitting here from Madhya Pradesh cabinet, our MLAs, our Honorable Member of Parliament from Indore, who's also here. Welcome all of you. As our Chief Minister has very clearly defined a lot of things, I would just mention a few of them. About 5,000 industrialists have signed up for this MPGIS 2023. Welcome all of you. Nearly 450 have expressed their interest to personally interact with our Honorable Chief Minister. 500 of the country's top industrialists are here. And of course, on the dais are the leading industrialists of the country. They've taken out their very valuable time and come here. Please, I would like all of you to applaud them once. They're extremely, extremely gracious. We are very grateful to all of you for being here. Not only are we going to have B2B in this summit, we are also going to have G2B. We are going to be discussing exports, imports, direct investment, and all the strategic alliances that are possible. Madhya Pradesh, as you all by now know, has a conducive industrial ecosystem here. We have, since 2003, when Shivraj Singh Ji took over as the Chief Minister, I would like to tell all of you, we had a negative industrial growth in this state. Today, under his inspiring leadership, we are growing at a great 24%. I think that's amazing and deserves applause once again. MP also boasts of a lower living cost here, which makes it advantageous for industries to be here. Government of Madhya Pradesh has built up a superb ecosystem over time, as our Chief Minister told you. And now we are ready for practically all the sectors. Another interesting fact I would like to share with you, semiconductors was mentioned by Honorable Chief Minister. We are also a seismic-free zone that makes it ideal state for semiconductors. Any and everybody who is interested, we would welcome all of you. Over and above all this, not only is Indore the cleanest city, which we again and again mentioned to you and you really appreciated it, Indore is also a city that has both an IIT and IIM, and that tells you a lot about our state, what we can do for IT here. But I personally believe that our biggest strength is our most experienced Chief Minister that we have in the country. Shivraj Singh Chauhan is a fourth-time Chief Minister. Along with that is a Prime Minister who compliments us, who's the most popular Prime Minister, most inspiring, very decisive and ever ready to be here, supporting us all the time. I'm grateful and thankful to him as well. Now, Prime Minister has committed a $5 trillion economy. Chief Minister has committed a $550 billion economy.
I implore all of you to please stand with us, support us in achieving that. Honorable Prime Minister gave us the vision. He gave us a slogan, Atmanirbhar Bharat. Keeping in tune and in line with that, our Honorable Chief Minister has said, Atmanirbhar Madhya Pradesh. Atmanirbhar Madhya Pradesh is well on its way. Make in India, make in Madhya Pradesh. I would like to request all of you, ruke hue rahi ke liye koi ruka nahi, especially to my friends from the industry. This is the time. Please, we want to grow with you. आप आगे बढ़िए. मध्य प्रदेश कदम से कदम बढ़ा के आपके साथ आगे चलेगा. हम मिल के प्रगति करेंगे, मिल के विकास करेंगे, मिल के राष्ट्र निर्माण में योगदान करेंगे. मैं पुनः आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, मध्य प्रदेश is future ready. I hope you are ready to join us, ready to progress with us, ready to build the nation with us. Once again, I thank all of you, welcome all of you. इस हिंदुस्तान के हृदय स्थल में आपका पुनः बारंबार स्वागत है, अभिवादन है. धन्यवाद. Thank you, Honorable Minister, sir. And with that, ladies and gentlemen, we conclude this session, thanking all of you for your participation. And we now invite you to please join us for lunch. For our distinguished guest of honor, it's on the second floor, the Imperial Hall. For all our delegates, you're requested to please join us in the Nakshatra lawns. We also have the exhibition. There's also a digital exhibition area and a culture street. You're requested to kindly pay a visit during your break hours. Sectoral sessions, ladies and gentlemen, we have हॉलिडे प्लानिंग मतलब किसी मूवी जितना ड्रामा. तभी तो आई बुक ऑन अगोड़ा. 16 करोड़ ऐप डाउनलोड्स, 29 लाख होटल्स और होम स्टेज, कमाल के प्राइसेस. अगोड़ा ट्राई करो. डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत मदद की इस 108वीं कॉन्फ्रेंस के लिए. डॉक्टर जितेंद्र सिंह. परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे
भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हम सबके आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उप मुख्यमंत्री और हमारे मित्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, वाइस चांसलर डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, members of the faculty, students, delegates, ladies and gentlemen, हम सब के लिए आज ये बहुत ही सौभाग्य एवं आनंद का विषय है कि आज 2 वर्ष के विलंब के बाद हम 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के इस अधिवेशन के लिए नागपुर की नगरी में एकत्रित हुए हैं और एक ऐसे समय एकत्रित हुए हैं जबकि नव वर्ष का शुभारंभ भी हुआ है और ये वर्ष भारतवर्ष के लिए अनेकों कारणों से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यही वो साल है जबकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। यही वो साल है जबकि भारत के सुझाव पर विश्व भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है और यही वो साल है जबकि जिस परिसर में यह आयोजन हो रहा है, इस परिसर में स्थित विश्वविद्यालय भी अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा है। हम सब के लिए एक सुखद अनुभव ये भी रहेगा कि जब हम विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में अपनी जानकारियां, अपना अध्ययन साझा करेंगे तो हमें ये भी ध्यान में रहे कि इस समय देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब भारत की विज्ञान की उपलब्धियों के कारण दुनिया उसे इज्जत एहतराम की निगाह से देखने लगी है। और न केवल इतना ही बल्कि भारत के वैज्ञानिक अनुभव से सीख लेकर के दुनिया के विकसित देश भी अपने शोध को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सब इसलिए संभव हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन के गत 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल विज्ञान को प्राथमिकता और प्रोत्साहन दी बल्कि विज्ञान और वैज्ञानिकों को सम्मान दिया, इज्जत दी, एस्टीम दी, जिसके वो हकदार थे लेकिन शायद जो उन्हें पहले प्राप्त ना थी। ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने लाल किले से आह्वान किया स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और देखते ही देखते मात्र 350 से बढ़कर के हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स की संख्या 80,000 हो गई और दुनिया में स्टार्टअप्स में हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने हिंद महासागर में छिपी हुई अपार संपत्ति का एहसास करवाने हेतु हमें एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में 2021 और 2022 में डीप ओशन मिशन का उल्लेख किया। और ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने अंतरिक्ष विभाग को गोपनीयता के पर्दे से निकालकर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। परिणाम ये कि आज वहां प्राइवेट रॉकेट भी लॉन्च होते हैं और साथ ही साथ हमारा गगनयान भारतीय मूल के मानव को अंतरिक्ष ले जाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इस बदलते हुए वातावरण में आज अंतरिक्ष विभाग भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान भी करने लगा है। आपको हैरत भी होगी और गर्व भी महसूस होगा जब मैं ये बात आपसे साझा करूं कि आज तक कुल मिलाकर के भारतवर्ष में इसरो के माध्यम से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट्स की संख्या 386 है, जिनमें से लगभग 351 यानी 90% मोदी जी के कार्यकाल में लॉन्च किए गए। और ये आमदन का इतना बड़ा स्रोत बना कि यदि हमने अभी तक इन विदेशी सैटेलाइट्स के माध्यम से 220 मिलियन यूरोज कमाए हैं तो उसमें से 187 मिलियन यूरोज लगभग 80-90% गत 8-9 वर्षों में मोदी जी के ही कार्यकाल में। और हम अमेरिका, जिसने अपनी अंतरिक्ष यात्रा हमसे बहुत पहले प्रारंभ की थी, उसके सैटेलाइट्स लॉन्च करने में भी पीछे नहीं हटे। कुल मिलाकर के 115 मिलियन डॉलर्स कमाए गए, जिसमें से 98 मिलियन डॉलर्स 98 मिलियन ऑलमोस्ट 85% मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 8-9 वर्षों में।
इसका अर्थ यह हुआ कि इस देश में प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, जुनून भी था, आंखों में सितारे भी थे। परंतु कमी थी तो उस वातावरण की जो मोदी जी ने हमें उपलब्ध करवाया है कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुकूल राष्ट्र निर्माण में भरपूर योगदान दे सके। और आज जब हम 2022 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में बैठ करके मंथन करेंगे तो हमें ये भी ध्यान रहे कि ये नींव है 2047 के भारत की। Ladies and gentlemen, India today is a part of a global world, and to play that role of a global nation level, and the next level is that of sustainability. Sustainable startups, sustainable research, जिसके लिए अनिवार्य है optimum synergy between research, academia and industry. Don't forget industry. और इसलिए very appropriately, very thoughtfully, the focal theme of this year's Congress is sustainable science and technology for sustainable development and women empowerment. बहुत समय ना लेते हुए, वक्त की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात केवल ये कहकर के समाप्त करूंगा कि if the ultimate litmus test of any successful scientific endeavor is as to how much